Good evening. I am Anil Aggarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So I gave topic on discussion, that is role of banks in rural development. Now in this we have to first see the background of Indian banks and how they worked in the history. Till 1969, most of the banks are only city oriented. Their presence in rural areas was almost negligible. Very rarely any bank was having a rural branch. In 1969, the 14 major banks were nationalized by then government, and they were given the task to open more and more branches in rural areas. And a new concept of lead bank was introduced, where one bank was given responsibility to take care of branch expansion as well as development of banking in that very district. So all banks were distributed, some districts for thick and thin penetration of bank branches in the rural areas. So gradually we have seen since 1969 large number of branches were opened in the rural area, adopting a very proactive steps. And that was the phase when the shape of banking changed from class banking to mass banking. The people across country, more especially from rural and semi-urban people, started dealing with banks. This ensured them good flow of credit at reasonable cost. Prior to banking in their areas, they were taking money from money lenders, and money lenders were charging abnormal interest rates to them. And sometimes these people were losing their land to the money lenders. So the biggest achievement of banking in rural area was to take away rural masses from the clutches of money lenders. So this has acted as a historical step when the rural masses were no more dependent on money lenders active in their areas. Gradually they moved to banks, and now most of the people are dealing with the banks. Second major advantage of banks were that government was able to introduce welfare schemes, and money was used to go to the rural people directly without interference of third party. This has led to a lot of development in rural India. Before nationalization, we were importing grains and food articles from other countries. And then came the Green Revolution. The Green Revolution, the major part of Green Revolution is nationalization of banks. In 1969, the bank nationalization happened. In 1971-72, we achieved the Green Revolution, where the country becomes self-reliant as far as food is concerned, and now India is exporter of foods. So in rural areas, it has created infrastructure because the money lending was easily available. The rural masses were able to buy tractors, threshers, tillers, trillers, and then they were able to set their pump sets, irrigation facilities, minor irrigation, major irrigation. Then they have diversified into some activities like beekeeping and other allied activities. So banking has enabled the rural masses to grow their incomes. So when income grows, naturally prosperity grows. So banks played a pivotal role in growth of rural masses financially, and it made them self-reliant. Most of the wealth creation in rural area happened after nationalization of banks and when banks started lending to these areas. There are so many other points, so I have given you major thrust how the public sector banks, the banks in rural areas helped rural development. So credit plays vital role for economic development. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. विषय था हमारा रोल ऑफ बैंक्स इन रूरल डेवलपमेंट. तो इसके अंदर हमें पहले हिस्ट्री देखनी पड़ेगी. नेशनलाइजेशन से पहले बैंकों की क्या स्थिति थी. सभी बैंक शहरों से संबंधित थे और कोई कोई बैंक मुश्किल से गांव के अंदर ब्रांच खोले हुए था. 1969 में जब नेशनलाइजेशन किया गया और उनको मेजर टास्क ये दिया गया कि गांव-गांव में आपको शाखाएं खोलनी है, वहां से रूरल एरियाज में ब्रांचेस खुलनी शुरू हुई. 1969 के नेशनलाइजेशन में 14 मेजर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया.
इसके बाद इन सब बैंकों को डिस्ट्रिक्ट्स बांट दिए गए लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत, और एक जिम्मेवारी दी गई कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्रांचों को खोलना और बैंकिंग को बढ़ावा देना इस बैंक का मुख्य कार्य होगा। धीरे धीरे बैंकों की ब्रांचें खुलने लगी और रूरल एरियाज के अंदर बैंकों की प्रेजेंस नजर आने लगी। अब जो रूरल मासेस थे वो मनी लेंडर पे डिपेंडेंट नहीं रहे, अब वो अपने बैंक से लोन ले सकते थे और मनी लेंडर के चंगुल से वो बाहर हो गए। इससे जो पैसा गांव में पहुंचा उससे वो अधिक से अधिक फसल लगा पाए, अधिक से अधिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर पाए। धीरे धीरे ये देखने में आया कि भारत की पहली हरित क्रांति बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद ही संभव हो पाई। 1969 के अंदर राष्ट्रीयकरण हुआ, 71-72 में हरित क्रांति आ गई। हरित क्रांति से पहले हमारे देश के अंदर खाने पीने के जो खाद्य अन्न है और दालें हैं और तिलहन है, इसकी बड़ी कमी थी। हम ये इंपोर्ट करते थे चीज़ें। उस समय मेजर इंपोर्ट के अंदर फूड भी एक आर्टिकल थी। पर 69 के नेशनलाइजेशन के बाद 2 ही सालों के अंदर देश आत्मनिर्भर हो गया जहाँ तक अन्न का सवाल है। और आत्मनिर्भर भारत 1971-72 के अंदर अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, और ना केवल आत्मनिर्भर हो गया बल्कि दूसरे देशों को भी अन्न का निर्यात करने लगा। तो ये रोल है बैंकिंग का, जहाँ रूरल एरियाज़ के अंदर उसने प्रॉस्पेरिटी लाया, अन्न का उत्पादन बढ़ा। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग होने से लोगों के अंदर बचत करने की आदत बढ़ी। उसके अलावा वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बढ़ी क्योंकि अन्य एसेट्स के लिए भी बैंकों ने वहाँ पर फाइनेंस किया, जैसे ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, टिलर्स, पंप सेट्स। साथ ही साथ अलाइड एक्टिविटीज़ करने के लिए भी बैंकों ने बढ़ावा दिया, जैसे डेयरिंग, किसी ने बी कीपिंग का काम स्टार्ट किया। इसी तरह एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी जो आई, उसमें भी रूरल एरियाज़ में जो बैंक सेटअप थे उन्होंने महत्वपूर्ण रोल अदा किया। ऐसे पॉइंट्स बहुत हैं, पर मेजर पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बैंकों ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया रूरल एरियाज़ को डेवलप करने में, रूरल इकोनॉमीज़ को खड़ा करने में। गॉड ब्लेस यू ऑल।